Good evening, Namaste, Sat Sri Akal, and Assalamu Alaikum to all our lovely audience. I hope you all are doing well. We are happy to have you with us again. And today we have a special episode of Parijay. So welcome you all again to our show. This is Seema Sharif, your host, a relationship and emotional intelligence coach, an effective communications trainer, and a content writer by passion. We have with us our esteemed speaker guest, Dr. Deepak Kumar Chauhan. He's the head of Department of Law, Central University of Punjab, Bhatinda. As you all know that, we invite passionate plant lovers. So one of them is Dr. Deepak Chauhan, who not just has a passion for plants, but also lives it through his various endeavors that he has taken up. And his knowledge is vast and immense, for which he is going to be sharing with us a part of his immense knowledge that he has regarding the plants and the various approaches that you can have and the endeavors that you can involve plants with in your day-to-day life. India is a country with a rich heritage of ancient knowledge of how plants were involved in day-to-day life, whether it's health, mental health, physical health, or even some remedies to say for the different problems that you have in your lives and your surroundings. So Mr. Deepak Chauhan is going to be enlightening us on something called as the Grih, Nakshtra and Rashi, Vatika, and this is the extension of the previous episode. So Parijay is back with Grih, Nakshtra and Rashi, Vatika, an action-oriented approach by Dr. Chauhan. So Dr. Chauhan, it's over to you. Thank you, ma'am. Namaskar, सभी दर्शकों को नमस्कार. Good evening. आज इस जो सेकंड शो हमारा चल रहा है, in this today's show we are going to discuss on the Grih Nakshatra Rashi Vatika, its major benefits. हम धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से या कि सामाजिक रूप से उन लाभ जो होते हैं उनका जिक्र करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ ही जो भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र है और जो नक्षत्रों की गणना वहां पर की गई है, वो नक्षत्र तो आकाश में है, लेकिन पृथ्वी पर या यहाँ धरा पर और मीन्स ऑन आर दिस अर्थ, व्हाट इज देयर रोल, और हम कैसे उनको यहाँ पर भी जान सकते हैं। भारतीय वैदिक शास्त्र, जिसको कि एक गणितीय शास्त्र माना गया है, जो कि गणना पर आधारित है, और वो गणना हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा की गई है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ एक पीपीटी भी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि यहां पर हमको हेल्प कर रही है। तो ये है नवग्रह, नक्षत्र तथा राशि वाटिका के बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड एन ओवरव्यू ऑन ऑल दीज बेनिफिट्स। तो जब हम गणितीय शास्त्र की बात करते हैं, तो इसमें जो की जाने वाली गणनाएं हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशन भी इस बात पर आधारित है कि जो दूर नक्षत्र में, दूर आकाश में दिखने वाले नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, ग्रह जो कि घूम रहे हैं, तो उन घूमते हुए ग्रहों को एक पर्टिकुलर टाइम में और एक विशेष डायरेक्शन या डिग्री में लेकर हम किस प्रकार से यहाँ पर अपने घर, आंगन या अपने जो हमारे ऑफिस हैं या जो आसपास खुले मैदान हैं या जो कि वन के क्षेत्र हैं, वहां पर कैसे उनको स्थापित कर सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं with reference to this lecture. The contents I'm going to discuss with you. First, the introduction, the importance of Grih, Nakshatra and Rashi Vatika, establishment and management of Navgrah, Rashi, Nakshatra, Vatika, description of plants according to Grih, Nakshatra and Rashis. This I had already discussed in my previous lecture or previous discussion.
and conclusion. With this conclusion, today, with reference to action-oriented approach, I prepared a suggestion also that we will be having in the end of this PowerPoint presentation in the last slide. Now see, we talks about various herbs, shrubs, trees, plants. So see the role of herbs in the life of human being. And we all know that herbs plays very important and much important role in the life of human being, starting from his birth and after the death also in various ceremonies, sacraments. Now see, if suppose we are talking about Bharatiya Vedic Shastra or Jyotish Shastra, so the Vedic astrology that describes 9 grahas. My presumption is that, and the presumption is a strong presumption, that all knows about all these 9 planets or 9 grahas. वो सभी इन सब के 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं. Second, irrespective of religion, irrespective of our this genesis, we knows about the Rashis also. आप देख सकते हैं that we believe we are having rings in our hand, in fingers, और इस तरह के कुछ signs, those are available, symbols, sign and symbols available in all the religions. And nakshatras also. We can talk about nakshatras, और ये भी काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी होती ही है. Now, when we are talking about the policies और नीति, here मैं नीति शब्द जो कि एक हिंदी का शब्द है, ये जो संस्कृत भाषा से लिया हुआ है, उसका जो इंग्लिश वर्जन वी आर यूजिंग दैट द पॉलिसी, मैं उस पॉलिसी की बात ना करके नीति की बात करना चाहूंगा. नीति जो कि मनुष्य के हित में हो और जो कि समाज के भी हित में हो. सो हियर with that particular niti, we all are with a faith that every person should plant and take care of the trees. When I studied about 4 religion in comparative way related to the environmental issues, कि पर्यावरण के संबंध में किन धर्मों में क्या लिखा हुआ है, then I studied about 4 religions. हिंदू धर्म, या कि मैं उसको हिंदू संस्कृति की बात भी कर सकता हूं, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन और सिख. इन 4 धर्मों में मैंने पाया कि each and every religion is having a faith and that faith is available in all the persons. हम सभी लोग किसी भी रिलीजन की बात अगर करते हैं तो उन सभी धर्मों के प्रति हमारा एक फेथ है, एक विश्वास है. So we are talking about the belief and faith. So उस फेथ में I found that all should plant and take care of the trees. With that, we respect for animals or birds assigned to our grahas, rashis और nakshatras. And ये हम इसलिए भी करते हैं because the prakriti, the nature has given all these things to us and we made up of these things. And in return, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ उन ग्रह नक्षत्रों का संबंध बना रहे, like we are having our relationship with our mother and father, the same relationship with the nature. तो वही नेचर जब हम अपनी उसको ड्यूटी की बात करते हैं, तो जैसी ड्यूटी हमारी हमारे मदर फादर को लेकर, माता पिता को लेकर, समाज को लेकर है, वही ड्यूटी हमारी प्रकृति को लेकर भी है. सो इजी फॉर दैट. अब देखिए, आप कंसेप्ट इज देयर, पितृ पूजा कंसेप्ट इज देयर. सभी अपने अपने पितरों की पूजा करते, दूसरे के पितर की पूजा कोई नहीं करता है या उसके बारे में कोई नहीं सोचता है. बट हियर द सेम थिंग इन दिस सिस्टम, कि जो आपके ग्रह हैं, जो आपकी राशि है, जो आपका नक्षत्र है, आप उस ही की पूजा कर लीजिए. बट नाउ थिंक ऑल वर्शिप्स टू द नेचर. अब जो नेचर है वो सभी की जननी है, जो प्रकृति है वो सभी की जननी है. जो फादर हैं या पिता हैं, गॉड जिसको कि ईश्वर मानते हैं, ईश्वर कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं,
तो देखिए उनके प्रति सभी की ड्यूटी हो जाती है। तो यहाँ पर देयर इज नो नीड कि आप केवल अपने ही पितृ की पूजा करें या अपने ही पितृ का जो है आप ध्यान रखें। सो इट्स द ड्यूटी टू टेक केयर ऑल द नेचर और ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। दैट्स व्हाई हमको ग्रह नक्षत्र राशि वाटिका में सभी ग्रह, सभी राशियों और सभी नक्षत्रों को पौधे लगाने में कोई आपत्ति या हर्ज नहीं होना चाहिए। Now here we are having this particular concept, and that concept says that the position of the bodies at the time of birth. अब देखिए कि जिस टाइम पर जिसका बर्थ हो रहा है तो उस टाइम पर क्या पोजीशन रहा है, यू कैन कैलकुलेट विद दैट पर्टिकुलर पोजीशन, दैट इज द ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो नक्षत्रों का महत्वपूर्ण है और ये अचूक दावों का रहस्य भी है। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को सभी लोग मान्यता देते हैं। Now, once our ancestors, if suppose I'm talking about the Jyotish Shastra, so our ancestors established नवग्रह राशि नक्षत्र वाटिकास। ये हम आज कुछ नया कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, this is available, but yes, with parijay, with some other persons who are helping towards the work, towards the protection of nature, they found this particular concept and in this relevant time also. तो परिचय की हम बात करते हैं या हम सभी जुड़े हुए लोग जो उनकी बात करते हैं, समाज सेवकों की बात करते हैं, पर्यावरणविदों की बात करते हैं, उन सब ने उस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एक आपका कंसेप्ट था या हम नवग्रह राशि और नक्षत्र वाटिका को बनाते थे, तो सेम थिंग इज हियर सर। we searched that and found that and started working on this particular issue. Now see, when we are talking about this Grih Nakshatra Rashi Vatika, so most of these plants, if suppose we are going for the specification benefits and benefits, so most of these plants are rare medicinal trees species. Emphasis on ancestors for vision to conserve the genetic resources, to share its medicinal use. So here we can go for the ex situ conservation. So when we are talking about ex situ conservation, तो यहाँ पर जो है जो वहां पर नहीं अवेलेबल है, that we are going to take that particular tree and we are going to grow that in our जो हमारा नक्षत्र वाटिका है उसमें इसको ग्रो करने का हम कोशिश कर रहे हैं और कर सकते हैं। that can be happen. Now see the second thing about the benefits. So these are rich in secondary metabolites such as antioxidants, alkaloids, this terpenes and tannins, and are widely used for so many medicinal or traditional treatments. अभी भी we can see that जड़ी बूटी को हम यूज करते हैं और डायरेक्टली उसको जो है पौधों से लेकर यूज करते हैं। If suppose I am talking about this allopathic system, तो वहां पर भी उनसे ही लिया जा रहा है। We are collecting raw material from the जड़ी बूटी, from the herbs. So now see, with that the next benefit that comes in the form of more and more oxygen. So it is a proven fact that some plants releases more oxygen compared to the others one, and some plants in this Grih Nakshatra Rashi Vatika are such type of plants which releases more and more oxygens over the year. Now see, जब आपको ऑक्सीजन मिलता है, with that you will get more positive energy. So the cytochemistry and pharmacological significance of these species have also been proven by the scientists. अभी scientists हमारे जो है ये pharmacologist हैं, हमारे pharmacy industry के लोग हैं, working in the research laboratory, they are also working in the same field. The kinetic studies, they all own such type of herbs and shrubs, etc. So with this, we come to the next issue, that we will go to the aesthetic value of these plants. So see, this astrology or the traditional science that study the influence of these planets or stars, objects on human lives. And we all are well known about the effects of the influence of these one. So हम बात कर सकते हैं दशा की, दशा अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, means bad situation, good situation. So that works with these
objects and their situations or their locations. So now see the belief or it is believed that the position of stars and planets at the time of birth of a person can influence the life or events of the person. So the circular path, when we are talking about the circular path, so the circular path is divided into 30-degree angle from the Rashis, which are further divided into 15-degree 20 angle form a nakshatra. So see, when we are talking about a nakshatra is a mythical figure formed by a group of stars in the sky, और जो कि स्थिर रहते हैं. ग्रह आपके चलते हुए हैं planet पे, you can see and you can observe. But when we are talking about the nakshatra, they are fixed, वो स्थिर हैं वहां पर, महत्वपूर्ण माने गए हैं. So now the question is about the nakshatras. One of the Puran in this Hindu culture is talking about कि पुराण में दक्ष प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है नक्षत्रों को कि वो उनकी पुत्रियां हैं, और इनके विवाह के बारे में when I'm talking about the aesthetical thing of this, तो उनके बारे में बताया गया कि इनका जो विवाह है वो सोमदेव अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ, और चंद्रमा ने इन सभी रानियों में सबसे प्रिय रानी थी जो रोहिणी, उसकी वजह से चंद्रमा को श्राप का सामना करना भी पड़ा था, और वैदिक काल से इनका वैदिक काल से नक्षत्रों का विशेष महत्व माना गया. Now see, I just discussed with this thing that each of these are assigned with a deity, tree, animal, and bird. It's very clear. Now see, when we go to the chart, specific chart that I prepared over here, राशि नक्षत्र और उनका जो नाम है, किस नाम का पौधा लग सकता है, उसके यूजेस क्या हैं, वो यहाँ पर इस चार्ट में रखा गया है. When we are talking about the Rashis, nakshatras, the name of tree, the original name, and the scientific name and the uses. So this shows to us that when we are talking about the 12 Rashis, and these 12 Rashis, again we are talking about after these 12 Rashis about the nakshatras. So start from the Ashwani nakshatra. Ashwani nakshatra के लिए जो पौधा है हमारा, that is the कोचिला. और कोचिला, that is important plant, that is the base of some of the medicines in homeopathy, in allopathy. That is the Nux vomica. So Strychnos Nux vomica is the scientific name of this Cochila tree. So here we can see this helps to treat the weakness, the neurotic problems, hair fall, hair skin or skull, etc. Now see, the next nakshatra, जो हम भरणी नक्षत्र की बात करते हैं, and all know the benefits of a tree आंवला. तो आंवला जो ट्री है वो भरणी नक्षत्र का ट्री है, and here we can see that it is useful in so many diseases like the urinary problems, the indigestion problem, bleeding, diarrhea, constipation, etc. उसके पश्चात जो नेक्स्ट है, that is the कृतिका नक्षत्र. कृतिका नक्षत्र का जो पौधा है, that we know in the local language that the gular tree, and that is most useful in smallpox, chickenpox, etc. That also helps in the treatment of this diabetes also. Now come to the Rohini nakshatra. Rohini nakshatra के लिए you see the name of which is in our shlokas or in chants, Jambu Deepe. So Jambu Deep का जो एक पौधा बताया गया है, that is the jamun tree and most useful tree. So stomachache, indigestion, lack of appetite, etc. See, here I'm having only some references because I'm not a field of this medical background or working on the herbs or working on the Ayurvedic system. But the information that I collected and I analyze the collected information and giving it to all the audience. Mragshira had tree for this Mragshira. For Adra, Shisham, which again talks about as useful for the asthmatic attacks, wounds, ulcers,
Punarvasu Nakshatra, the plant for this, that Punarvasu Nakshatra, that is the Bas tree. That is also useful. Pushya Nakshatra, for Pushya Nakshatra, we are having the people tree. And we use the leaves of people. We use people for so many works in our life. So with that, see the importance of people. It is proved scientifically that it gives oxygen for 24 hours. So ये एक विचित्र पौधा है. I just had one small question. Could we share this information with our audience as well post the show? Yes, why not, ma'am? This information I have collected from various resources. Those resources are universal. It's a very valuable information that you're sharing with us. Audience also. Now see about the Ashlesha Nakshatra, or for Ashlesha Nakshatra, we are having Nag Kesar tree. These trees are exemplary, and we are having alternative trees or alternative herbs for this particular list also. Now see the Megha Nakshatra. For Megha Nakshatra, what Vraksh, see the quality of that what Vraksh, that is having so many roots from the branches also and from the bowl also, earth bowl also. So like that, we are having this tree. So this tree is useful for us. This is helpful in the biodiversity maintenance also. Now see the Faguna Purva Faguni. So for this, we are having the tree of Plas or Dhak. ढाक के बारे में कहावत भी बड़ी मशहूर है कि ढाक के 3 पात होते हैं. तो means से these 3 paths are most important and useful for mouth ulcer, diarrhea, wounds, control of blood sugar, etc. The next nakshatra, that is the Hasta Nakshatra. For Hasta Nakshatra, we are having the tree of Rita. ये रीठा ट्री नॉर्मली हमारी क्लाइमेट में इजीली हो जाता है. एंड आई एम जस्ट एग्जांपल्स दैट आई टुक ओवर हियर, जो पौधों के नाम लिए हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यही की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लोकल जो हमारे पास हो जाते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लिए गए हैं. एंड वी ग्रो ऑल दीज ट्रीज इन दिस एनवायरमेंट ऑल्सो. तो इसीलिए इनको यहाँ पर रखा गया है ताकि आपको ये प्रॉब्लम भी ना आए कि सर ये तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा. We are having so many alternative options also of these plants. When we are talking about the next one, next nakshatra, Chitra Nakshatra. For Chitra, बेल पत्र is there. उस बेल पत्र को भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ाया जाता है. उस बेल पत्र का जूस भी लिया जाता है. And when we are talking about the fruit, that fruit is most important fruit. और उसका जूस जो है वो इम्पोर्टेंट है और यूजफुल है. विद दैट जूस, द ड्राई कवर ऑफ दैट फ्रूट, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सो मेनी डिजीजेस. सी द स्वाति नक्षत्र. द स्वाति नक्षत्र, वी आर हैविंग द ट्री ऑफ अर्जुना. सी फ्रॉम द बार्क, रूट्स, लीव्स, स्टेम, इस पौधे का भी सभी कुछ इंपॉर्टेंट है. बीज, फल, जो भी हम इस पौधे का ले सकते हैं वो हमारे लिए किसी न किसी बीमारी में काम आता है. सो दैट्स व्हाई दिस अर्जुना इज हैविंग सो मेनी गुड क्वालिटीज, एंड दिस इज यूजफुल फॉर हार्ट डिजीज, joining of the fractured bones. Vishakha, the next nakshatra is Vishakha. With that Vishakha nakshatra, we are having one tree, the Nakesar, second one is the Kataiya. Kataiya, जो local language में उसको हम रूसा भी रूसा बोलते हैं, रूसा कटैया. That is most useful plants. छोटे कांटों वाला होता है, चौड़ी पत्ती, जैसे कि पालक की पत्ती होती है उस तरह की पत्ती इसकी होती है, थोड़ी लंबाई की होती है, प्योर पालक की तरह नहीं. स्मॉल कांटे वहां पर छोटे होते हैं. That is also useful. और ये सभी जगह मिल जाता है यहाँ पर इस क्लाइमेट में उगा हुआ. That is, see the use of this particular kataiya, useful in hyperthermia,
This hormonal imbalance can be controlled with this one. It is a good pain reliever also. Nagakesar, again useful for the same things. Now see the Jyeshtha Rashi. For this one, we are having the Shalmal tree or the cheer tree. Here, this is again useful for the skin problems, influenza, and chickenpox, etc. Now, in the Mula Nakshatra, the tree of sal is important. And the useful wood of sal, the wood of sal is most useful. We used to take is for our roofs of our houses. Now, see the medicinal value. This is useful for this fever treatment, inflammation, ulcer, and obesity, etc. इसका काफी यूज यहाँ पर साल की लकड़ी का रहता है, साल के पौधे का रहता है, उसकी लकड़ी भी बहुत यूजफुल है. Now, the next one is the Purvashadha. For that, again, we are having the Vat Vraksh. आप नाम से भी समझ सकते हैं Vat. So that is again useful for the common colds, this heartburn, food poisoning, etc. Uttarashadh Nakshatra. For this, we are having the plant of कटहल. कटहल का पौधा फल भी देता है, वो भी यूजफुल है, और उसके जो पत्ती है वो भी काम आता है, बार्क भी काम आता है. Now see the plant of ark. इसको अर्क भी बोलते हैं. For the श्रावण नक्षत्र, आंख या अख बोलते हैं, उसको लोग अपने घरों में भी लगा कर रखते हैं ज्यादातर. It is well-known plants. See the use of this one. This is useful for this spleen complaints, stomach ache, cardiovascular problems, fever, jaundice, leprosy, and skin infections for also. See the Ganishta Rashi, खेजड़ी. हमारे यहाँ पर इस प्लांट का काफी पूजा किया जाता है. शनिवार के दिन भी इसकी पूजा की जाती है और कुछ और दिनों में भी इसको लोकल यहाँ पर पूजा की जाती है. खेजड़ी मीन शमी. शमी जो कि शनि जो हमारे यहाँ गॉड हैं उनका भी इसको प्रतीक माना गया है और इसकी पूजा का फल जो है सीधे वहां पर हेल्पफुल होता है. नाउ सी द मेडिसिनल वैल्यू. सो इट इज यूज्ड इन कफ, साइकोसिस एटसेट्रा. शतभिषा राशि नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कदम्ब का जो पेड़ है वो यूजफुल है. फॉर दैट कदम इज यूजफुल फॉर द कार्डियक प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स एटसेट्रा. पूर्वा राशि आम्र, आम पत्र. सो दिस इज यूजफुल फॉर ब्लड प्रेशर, अस्थमा, diabetes, dental problems. The next is भाद्र, उत्तर भाद्रपद. इसके लिए जो नीम का वृक्ष है वो इस नक्षत्र के लिए हम लगा सकते हैं, लगाते हैं. And we all know the uses of neem tree. रेवती नक्षत्र, उसके लिए मधु का, जो कि स्किन डिजीज या महुआ बोल देते हैं, स्किन डिजीज, बॉडी पेन और इन सब बीमारियों में जो कि एक यूजफुल मेडिसिन के रूप में काम आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एलोपैथी मेडिसिन. नाउ since we are talking about the action oriented approach, what we did in my last lecture, just I talked about Grih Nakshatra Vatika. Now here is a picture, or which is the actual picture which just I took today in my mobile, and here this is for your consideration. So these efforts started under the patronage and guidance of our Honorable Vice Chancellor, and with the help of Pre-J, here I took help from Ekta Madam. She helped me a lot in establishing this Grih Nakshatra Rashi Vatika. Since this is aerial view from the 4th floor,
तो यहाँ पर वो पौधे छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं. What we did over here, we put all the plants of Grih Nakshatra Rashi in some gamlas and put those gamlas into the soil over there, land over there, कि वो साइज में बहुत बड़े ना हो जाएं. See, suppose we are talking about the what tree, पीपल ट्री, कदम ट्री, नागकेसर, तो पीपल का या वट का जो साइज है बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ा साइज होने के बाद उसको कवर कर लेगा, बाकी पौधों को वहां पर जगह नहीं मिल पाएगी ग्रो करने के लिए. दैट्स व्हाई दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड ओवर देयर. तो हमने उन सभी प्लांट्स को पोट्स में रखा है जमीन के अंदर, ताकि वो बहुत बड़े ना हो सके और वो वहां पर ग्रो करने के बाद दिखते रहे. और वन कैन एंजॉय, अगर बहुत बड़ा प्लांट होगा तो वो उनका शेप दिखाई नहीं देगा. वन कैन एंजॉय दोज प्लांट्स बाय विजिटिंग दिस ग्रह नक्षत्र राशि वाटिका. Now see the conclusive remarks over there. So this can be concluded better by all the audience, but here just I put some points in the name of conclusion. Like when we are interested in establishing this Grih Nakshatra Rashi Vatika, so the plantation according to the Navgraha, Rashi or Nakshatra, with a belief that it will give the prosperity and definitely with good mind and good health. तो अगर हम इसको कर भी रहे हैं, पौधे हम लोग लगाते हैं, सभी पौधे लगाते हैं, but we can do this as an experiment, कि हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम इन पौधों को लगाएं, तो इसका कुछ फायदा हमको डेफिनेटली मिल रहा है. देखिए, पौधे लगाने का फायदा सभी को मिलता है और मिल रहा है. दिस इज सेम विद ऑल द थिंग्स. एंड विद दैट हमारे पास एक प्रोस्पेरिटी के लिए एक इशू ये लग जाता है कि ठीक है, इसको लगाएंगे तो प्रोस्पेरिटी आएगी. इट मींस वी आर गेटिंग द पॉजिटिव एनर्जी. नाउ सी various endangered species and the rare plants we are going to protect, or we are going to conserve those plants. Here I am talking about the conservation, not about the preservation. Conserve कीजिए उनको और आप उनको maximum distribution कीजिए सभी के फायदे के लिए. Now it is helpful to get good this physical and mental energy by sitting under the this concerned trees. जो भी आपका concerned tree है according to your ग्रह नक्षत्र राशि, उसके अकॉर्डिंग उसका हम हेल्प ले सकते हैं. नाउ सी द प्रेजेंस ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीज ऑफ नवग्रहs, trees of rashis or trees of nakshatras. So the complete set of these trees directly creates healthy and sound physical, mental, or this psychological and spiritual being or beliefs over there. So this is the ultimate and absolute bliss to oneself and to the earth too. आप खुद के लिए भी करते हैं और अर्थ के लिए भी करते हैं, और ऐसा मेरा विश्वास भी है, शायद सभी का ऐसा विश्वास हो, ऐसी मेरी इच्छा है. It is also shows how significant are the trees for our survival. Assures the protection of knowledge of our sages and saints have woven the trees in our lives. And by this way, we realize the significance of trees in every possible way and are eager to protect the trees. जो भी इसको देखता है, if suppose you are doing this particular establishment of ग्रह नक्षत्र राशि वाटिका, आप ग्रह का कीजिए, राशियों का कीजिए, नक्षत्रों का कीजिए, सभी का कीजिए, कोई दो का कॉम्बिनेशन लीजिए, that depends on you and the sources available with you and the time for the management. Now, moving to the next or the last slide. Suggestions are here. So, action plan to develop Navgraha Rashi and Nakshatra Vatika. This can be by two ways. Laghu Nakshatra Vatika, Laghu Grah Nakshatra Rashi Vatika, or Vrad Grah Nakshatra Rashi Vatika. So again, depends on the sources and space available with you. So at home, at office, other
space is available nearby you, we can go for this Nakshatra Rashi Vatika. If suppose we are willing to establish this Vatika at our home, take some pots. आप नवग्रह के लिए 9 पोट्स ले लीजिए, उनको तैयार कीजिए, जो ग्रहों के पौधे हैं आप उसमें पुट कीजिए, उनको लगाइए और उनको उसी डायरेक्शन में रख दीजिए जैसे कि आपके ग्रहों की डायरेक्शन होती है। सूर्य से स्टार्ट कर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो घर पर भी आपके ग्रह राशि का, नवग्रह राशि का तैयार हो, ग्रहों ने नवग्रह राशि वाटिका तैयार हो सकती है। नक्षत्रों के लिए 27 पौधे हमको चाहिए। इफ सपोज यू आर हैविंग एनफ स्पेस, और स्पेस सभी की छत के पास हो जाता है, अगर आंगन में नहीं है तो छत पर स्पेस होगा, तो छत पर भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। सो फॉर दिस टेक सम पोट्स और गमलाज एंड डू इट। एंड इफ सपोज एनी help is required, any query is there, I may be contacted through my email or the mobile number. So with these words, thank you to all listening me patiently and just for your valuable time. I thank you to all. Thank you Seema ma'am, thank you Ekta ma'am. Thank you so much sir, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई है हमें। सर मेरा एक छोटा सा एक डाउट था, ये जो आपने 3 अलग अलग तरीके के जो आपने कहा कि हम लोग वाटिका जो हम लोग बढ़ा सकते हैं अपने खुद के घर में, आंगन में हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ये सिर्फ स्पेस की कमी की वजह से है जो ये अलग है, या इनका भी कोई और इसका कोई स्पेसिफिकेशंस हैं? जैसे आपने बताया कि लघु नक्षत्र वाटिका अलग है और सिर्फ नक्षत्र वाटिका अलग है, और कुछ में 9 ग्रह लगते हैं, कुछ में 7। नहीं तो मैम, इसका थोड़ा जो बताया है मैंने वो यही है यहाँ पर कि देखिए, नवग्रह के 9 पौधे हैं, राशियों के 12 पौधे, नक्षत्रों के 27 पौधे हैं। आपके पास जितना भी स्पेस अवेलेबल, अगर आप सभी को इकट्ठा करना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पर इस पिक में यहाँ पर ग्रहों के पौधे लगे हुए हैं, नक्षत्रों के पौधे भी हैं और राशियों के पौधे भी हैं। सबसे पहले 9 पौधे यहाँ पर ग्रहों के लगाए हैं हमने, फिर नक्षत्रों को जगह दिया है, सर्कल बड़ा हुआ, और उसके बाद राशि के पौधों को जगह दिया है। तो 9 पौधे हमने 9 ग्रहों के लगाए हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद 27 पौधे जो है वो नक्षत्रों के लगाए हैं और 12 पौधे राशियों के लगाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है या समय नहीं है, तो उस केस में आप इसको लघु नक्षत्र वाटिका के रूप में अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आपके पास स्पेस कितना है। सपोज स्पेस इज ऑन द बालकनी, छोटे सा बालकनी आपके पास में है, तो वहां पर आप 9 गमलाज में उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपके पास थोड़ा बड़ा स्पेस है तो ग्रह के साथ नक्षत्र राशि सभी को आप रख सकते हैं। घर के अंदर भी इसको तैयार कर सकते हैं, घर के बाहर भी तैयार कर सकते हैं, आसपास का कोई स्पेस है वहां पर भी कर सकते हैं। So that's why I'm having the absolute concept and the idea of ग्रह, नक्षत्र and राशि वाटिका। ये सभी एक जगह हमने तैयार किए हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल था तो ये तैयार हुआ। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है, कम स्पेस है, तो उस केस में जो है व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर द चॉइस, पर्टिकुलर चॉइस, कि चलिए 9 ग्रह के पौधे लगा लेते हैं, फिर राशि के, फिर उसके बाद नक्षत्रों के। तो दैट डिपेंड ऑन द स्पेस। तो लघु का मैंने इसलिए कंसेप्ट दिया है क्योंकि सभी के पास इतना टाइम और शायद स्पेस ना हो। स्पेस इज द मेन इशू। तो स्पेस अगर नहीं है तो हम अपना टाइम सेविंग भी कर सकते हैं और हम अपने घर पर इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मीन्स टू से कि लघु और वृद्ध, बड़ा और छोटा दोनों ही हो सकते हैं। बड़ा अगर जगह तो आप बड़ा बनाइए, अगर छोटा जगह है तो आप भी उसका लाभ लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए लाभ नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई माय दिस पर्टिकुलर द बेनिफिट्स, ओवरव्यू ऑफ द बेनिफिट्स। तो लगाने से भी एक मन की संतुष्टि मिलती है कि मेरे पास में 9 ग्रह के और राशियों के पौधे हैं और मैंने गमले में ही उसको तैयार घर पे किया हुआ है। सो जस्ट हम क्या कर सकते हैं कि उनको दिशाओं के अकॉर्डिंग कंपास की हेल्प लेकर अपने घर पर भी रख सकते हैं, वो भी वही लाभ देंगे। और स्पेस अगर ज्यादा है तो सबसे अच्छा होगा कि उसको पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए हमने तैयार कराया है सभी लोगों ने मिलकर, तो उसका पब्लिक भी फायदा ले और उनको उसकी जानकारी भी मिले, और नक्षत्रों के जो पौधे हैं उनकी जो मेडिसिनल वैल्यू उसका भी वो लाभ उठा पाए। जी, बहुत खूबसूरती से आपने बताया है सर। आई मीन इतना विस्तार से बताया कि अभी मैं खुद सोचने लगी हूँ कि इसको कैसे अपने घर में लाकर इसको बढ़ा सकूं।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। आई डोंट थिंक काफी ऑडियंस इसके बारे में जानती भी होंगी, या अगर जानते हैं तो मे बी दे डोंट नो कि कहाँ से इसकी पूरी जानकारी मिले। तो एक साथ आपने इतनी सारी जानकारी उन्हें दी, तो आई एम वेरी श्योर दैट मेनी पीपल विल बी बेनिफिटेड फॉर बोथ फिजिकल, मेंटल एंड देयर स्पिरिचुअल हेल्थ आल्सो। That was so wonderful and we are so happy that you are here. बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने अपना समय, कीमती समय निकाला। आप इतने अच्छे काम करते हैं, इतने अच्छे प्लांटेशंस करते हैं, जगह जगह पर जाते हैं। You create awareness for the environment, for making it more greener. I think it's a pleasure to have you with us over here. I would definitely agree. इससे पहले कि I head it on to Ekta, I would just like to tell my audience, whoever has joined first time with us, it's a small peek into us. Parijay Genus is committed to the cause of a greener environment, where we are restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us, which mankind has been continually depleting. So we need to pass on this green legacy to our generations for a better tomorrow, and it's time that we brought a green revolution. Also, that our motto and belief is that every corner needs a plant. अगर आपके पास बड़ा घर नहीं है, कोई बात नहीं, छोटा सा एक गमला रख लीजिए, उससे जो आपको ऊर्जा मिलती है उसकी बात ही कुछ और होती है. And I would like to request Ekta to give her thoughts, as you've been actively involved with Mr. Deepak, and आप दोनों भी बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक साथ जुड़ के भी. तो इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी हमारे इस मिशन में जुड़े. एंड ओवर टू यू एकता. थैंक यू सीमा. सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर दीपक, आपका हमारे शो में आने के लिए और हमारे साथ ये जो विषय है ग्रह नक्षत्र राशि, इसके जो आई थिंक पता तो होता है हमें कि ऐसा कुछ है, लेकिन राइट नॉलेज नहीं होती और इसलिए हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो ऑडियंस आए हुए हैं कि अगर उनका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछें. आप चैट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और जो भी पूछना चाहते हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं. सो एनीबडी, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है प्लीज रेज योर हैंड और टाइप इन द चैट बॉक्स. सो एंड दूसरी, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपने सारा का सारा ही लगवाना करना है, लेकिन आप अपनी अपनी राशि या ग्रह के मुताबिक कोई ना कोई पौधा जो है वो जरूर लगा सकते हैं. मकसद क्या है कि अलग अलग पौधों के अलग अलग मतलब हैं और हमें उन पौधों का जो बेनिफिट है वो समझना है. सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, उसको हम एक साइंटिफिक वे से लेना है. जैसे आज हमने डिस्कस किया, इतने अच्छे से डॉक्टर दीपक ने हमें बताया कि हर पौधे का एक रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ मेडिसिनल बिलीफ है. तो एक मेरा मानना है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इतने उनको पता था कि कुछ चीजें जो हैं वो कहने से नहीं होंगी, तो उन्होंने एक अलग अलग तरीके ढूंढे. जैसे हम लोग पंच तत्व हैं, पंच तत्व उसको हम पूछते हैं. क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो हमें कुछ देते हैं. इसी पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. डॉक्टर दीपक, आप आई थिंक ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं. गोवर्धन पर्वत है ना, पूजा जो की जी, इंद्र की पूजा की जाती थी. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, आपने उसको कभी देखा है? तो जवाब आता है कि नहीं, हमने नहीं देखा. कहते आप ये देखिए ना, ये गोवर्धन, आप गोवर्धन बाबा की पूजा क्यों नहीं करते? कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है वो हमें शेल्टर दे रहा है, वो हमें हवा दे, वहां की जो वनस्पति है उससे हमें दवाइयां मिल रही हैं, वहां से हमें खाना मिल रहा है. पशु पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है. तो वो इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम, हमारा एक रिवाज था कि जब भी हम लोग कभी भी किसी भी नेचर से जब हम कुछ भी लेते थे, अगर नदी से पानी लेते थे तो भी हम हाथ जोड़ते हैं, किसी पेड़ पौधे से कुछ लेते थे तो भी हाथ जोड़ते हैं, किसी पशु पक्षी से कुछ ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हम लोगों की हाथ जोड़ने की प्रथा थी जो हम आज भूल गए हैं. वो जो हाथ जोड़ने की प्रथा थी वो प्रथा इसलिए नहीं थी कि हम लोग, ये एक रिस्पेक्ट थी कि अगर हमें कोई कुछ दे रहा है, एक हम, ये हमारा थैंक यू कहने का तरीका था जो हम आज भूल गए हैं. अब वो थैंक यू नहीं बोलते, हम थैंकलेस हो गए हैं, इसीलिए हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं.
हमारा जो मकसद है कि वो जो हमारी थैंक यू कहने की प्रथा है, जब भी हम किसी से कुछ भी लेते हैं, किसी से कोई हेल्प लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तो हम थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जरूर बोलते हैं। लेकिन हम लोग अपनी नेचर के लिए थैंकलेस हो गए हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने ये जो प्रथाएं बनाई थी, ये रिवाज बनाए थे, उनका एक मतलब था जी, उसका कोई ना कोई साइंटिफिक पहलू था। तो अगर हम उसको समझ पाए तो यही हमारा मकसद है कि हम उन वैल्यूज को समझें, क्यों हम हाथ जोड़ते हैं, क्यों हम पूजा करते हैं, क्यों हम रिस्पेक्ट देते हैं, नदी नाले पहाड़ तालाब उन सब की क्यों रिस्पेक्ट की जाती है, क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, वो हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, हमें हमारे जीने का सहारा है। पानी, हवा और खाना, इसके बिना सर्वाइवल जो है वो नहीं है, और ये हमें नेचर देती थी। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी नेचर से जुड़े रहेंगे, अपनी अपनी राशि का, ठीक है, किसी भी बेनिफिट से लगाइए, अपनी अपनी राशि का एक पौधा, हमारी रिक्वेस्ट है आप जरूर लगाएं। आई थिंक दीपक जी, टोटल कितने प्लांट्स हो जाते हैं? ये 12 और 9 और 27 जी, तो ये टोटल अप्रोक्सीमेटली 70 प्लांट्स हैं। 70 से कम पड़ते हैं। देखिए 12 हुए हमारे पास, एक पौधे, हम 9 पौधे लेते हैं 9 ग्रहों के लिए, 21 12 पौधे 48 राशियों के हो गए, जी 21 जी हुए, और 27 पौधे हमारे पास जो है वो नक्षत्राज के हैं। तो जी कुल जी मिलाकर हमारे पास में 48 प्लांट्स ये हुए। 48 जी जी। तो ये 48 प्लांट्स हैं। देखिए, इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, आप खुद के लिए लगा सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उनके डेट ऑफ बर्थ और उनकी राशि के हिसाब से भी पौधा गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल सी चीजें हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो हम अपनी अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ देकर जा सकते हैं। तो इसको आप ये मत सोचिए कि हाँ जी इसके साथ कुछ रिलीजियस बेनिफिट्स, डेफिनेटली वो रिलीजियस जो प्रॉब्लम बेनिफिट्स हैं वो हैं, लेकिन उसके साइंटिफिक हमारी हेल्थ के ऊपर उनका जो इफेक्ट है, उसके लिए आप खुद से भी पौधे लगाएं, गिफ्ट भी कीजिए। और अब सो सीमा जी, ओवर टू यू। दीपक जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एकता। यस दीपक जी। और तो मैम बस ठीक ही है सभी कुछ। अगर कुछ रिक्वायरमेंट लगता है आपको तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है यहाँ पर फेसबुक जी के जी थ्रू भी, तो अपनी ईमेल आईडी भी शेयर किया है। तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आती है तो मैं वहां पर उसका रिप्लाई करूंगा। यही कहना चाहता हूँ इस भाषण के अंत में। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनीवन इन द ऑडियंस, आपको कोई सवाल पूछने हैं दीपक जी से, या हम लोगों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो एंड आस्क अस। ओके, so I just wanted to sum up जो आपने बताया कि आई थिंक ये जो एंशिएंट हेरिटेज है, तो उसके पीछे जो साइंस है वो हम लोग आजकल भूल चुके हैं। वी हैव फॉरगॉटन दैट इन दिस, ये भागदौड़ में सब कुछ इतना एवरीथिंग इज सो केमिकल एंड एवरीथिंग इज सो सिंथेटिक कि हम लोग ये नेचुरल तरीके से जो कुछ भी हम लोग डील कर सकते हैं उसको भूल चुके हैं। एंड आई थिंक यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दीपक जी, एकता एंड ऑल्सो बसी जी भी जो हैं। सो आई थिंक आप लोग इस चीज को जो रिवाइव कर रहे हैं ये बहुत खूब है। एंड आई थिंक मेरे जो ऑडियंस हैं दे ऑल नीड टू नो कि इस चीज को हमें और बढ़ावा देना चाहिए एंड अडॉप्ट करना चाहिए इस चीज को। इट्स सो सिंपल। With that, I would like to thank Deepak ji again for being with us on the show. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे शो पे आए। And Ekta, thank you for that little insight that you gave, you know, on our the history that we have, the rich cultural history that we have, and कैसे हर चीज interrelated होती है इंसानी जिंदगी से। That was a wonderful thing. And I would also like to thank my audience for being with us and connect with us on every first and third Saturday for a greener, happier tomorrow. We invite passionate plant lovers to be on our show as speakers. Please हमारे साथ जुड़िए. You have all the information in the chat box, so you can reach out to us. We also have a mission of 1 lakh Trivenis to be planted pan-India.
So you could reach out to us on how to go about this mission, be a part of our mission, and make it a greener, happier world. Let's leave a green legacy for the next generations that could come about. खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर जीना उसी का नाम है जो आप दूसरों के लिए जिए, खासकर अगर वो आपके बच्चे हों तो आई थिंक आपकी पूरी जान लगा देनी चाहिए कि आपके बच्चों के लिए आप एक खुशहाल जिंदगी, एक खुशहाल दुनिया छोड़ जाएं. तो प्लीज spread this word. Please come and join hands with us. And I think with this, we would like to wish everyone a good evening again and a happy weekend. So we'd like to take leave from our audience. Please stay in touch. Please stay in tune with Parijay Genius. We are here for a greener, happier tomorrow. Thank you so much.